23. बस एक छोटा सा टॉपिक है, सिंपल है, इसमें कोई नहीं है, पहले की पढ़ी हुई चीज़ें हैं। फोरियर सीरीज एंड एलटीआई सिस्टम्स मींस, इसका मतलब क्या होगा कि अगर एलटीआई सिस्टम है उसको इनपुट पे अगर आप पीरियोडिक सिग्नल दें तो उस एलटीआई सिस्टम की आउटपुट क्या होगी। ठीक। सो फ्रॉम आइगन वैल्यूज आइगन फंक्शंस वी से दैट, हमने पढ़ा था पहले एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एस के टी, जो अभी क्लास में स्टूडेंट ने स्टार्ट में क्वेश्चन भी पूछा था। Then we say the corresponding eigenvalue is given by h of sk, that is equal to integral h of t e raised to the power minus skt dt. Or for discrete, if we say x of n is zk power n, then h of zk is summation n from minus infinity to plus infinity h of n zk power minus n. अब वही क्वेश्चन है, नाउ वी कंसिडर एस के इज इक्वल टू जे ओमेगा के, और दैट इज इक्वल टू जे के ओमेगा नॉट, जो क्लास के स्टार्ट में पूछा गया था, सिग्मा के प्लस जे ओमेगा के, वी से सिग्मा के इक्वल्स टू जीरो, देन इट रिप्रेजेंट्स अ पीरियोडिक सिग्नल, then sk is equal to j omega k, or we say omega k's are harmonically related, so we said is equal to j times k omega naught, where k is an integer number and omega naught represents the fundamental frequency. Then the corresponding eigenvalue is given by, ऊपर क्या था, h of sk, now we say sk is equal to jk omega naught, then h of jk omega naught is equal to integral from minus infinity to plus infinity h of t e raised to power minus jk omega naught t dt. Then the corresponding output of an LTI system is always given by convolution of input and the impulse response. Now if we say x of t is represented in the form of Fourier series, तो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या थी, समेशन ए के ई रेस पावर जे के ओमेगा नॉट टी, then the corresponding output of an LTI system is given by summation k a k is h of j k omega naught into e raised to the power j k omega naught t. So it simply says that अगर x of t के कोफिशिएंट्स क्या हैं, a k's हैं, तो y of t के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, they will be scaled, and they will be scaled by the corresponding eigenvalue. So similarly for discrete time periodic signal x of n with zk represented in the polar form as rk e raised to power j omega k. Rk represents the magnitude of the kth frequency component and omega k represents the angle. So we say zk is equal to rk e raised to the power jk omega naught. Now the signal input signal is a periodic discrete time periodic signal x of n a k is summation a k raised to power j k omega naught n. तो आउटपुट क्या होगी corresponding LTI systems के लिए, again it is input convolved with the impulse response, then output will be equal to summation k for n a k is into h of e raised to the power j k omega naught, मतलब z k को मैं क्या ले रहा हूँ, r k raised to power j k omega naught. So again we say if r k equals to 1 or r equals to 1, ठीक, then output of LTI system is given by summation a k h of e raised to power j k omega naught into e raised to power j k omega naught n, with h of zk defined as the eigenvalue, that is summation n from minus infinity to plus infinity h of n zk power minus n, और with zk is equal to, यहाँ पे हमने क्या लिए, r k e raised to power j k omega naught, and here we say, let's say r is equal to 1, ठीक है, then the corresponding output is a k times h of e raised to power j k omega naught e raised to power j k omega naught n. तो ये टर्म आपके पास क्या है, we say it represents the
eigenvalue of the LTI system. And with r equal to 1, then we say h of e raised power j k omega naught is summation n from minus infinity to plus infinity h of n e raised to the power minus j k omega naught n. तो अगर y of n की कोफिशिएंट्स क्या हैं b केज हैं ठीक है सॉरी यहाँ पे x of n है अगर x of n input signal at discrete time and their coefficients are denoted by say b case अगर इसको हम सेम कर लें with reference to the first one अगर x of t के coefficients a case हैं तो प्लीज इसको करेक्ट कर लें we say x of n has the coefficients a case then coefficients of the output signal are h of a raised to the power j k omega naught multiplied by a case means these coefficients are b case. So shortly अगर input signal क्या है periodic signal है of an LTI system with a given impulse response h of t or h of n तो corresponding आउटपुट क्या होगी उस LTI सिस्टम के जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होंगे so the coefficients of the output signal are the coefficients of scaled inputs है coefficients तो input signal की coefficients हैं a case and they are scaled by the value of a raised to the power j k omega naught ठीक मीन्स अगर इनपुट पीरियोडिक है तो आउटपुट भी आपको पीरियोडिक मिलेगी with the coefficients to only the coefficients of the output signal will be scaled और scaling value क्या होगी this will be the corresponding eigen value of the LTI system. अगर आप इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लें बुक में Fourier series and LTI system in book तो इस एक एग्जांपल को देख लें फिर बाकी को मसला हो तो कर लेंगे एग्जांपल 3.16 है that says that suppose the periodic signal x of t discussed in example 3.2 is the input signal of the LTI system with an impulse response अब impulse response आपको given है that is h of t equals to e raised power minus t u of t impulse response of the LTI system is known. Also, the input is a periodic signal, which is given in example 3.2. Find the output सर आपकी आवाज चली गई